Hello class 8 students. We are in square and square root. In previous two videos we all studied about the square numbers, about the properties of square numbers. In this video today we will also study about the properties of square and how to find the square of any number. So here it is a table: 0 square 0, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, and 9 square is equal to 81. So what we observe here, the property is to find the unit digit of square number of any number. किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा बिना कैलकुलेशन के बताना है. कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी. तो इसके लिए रूल्स है. फॉर फाइंडिंग the unit digit of square of any number. This is the topic for today. So here it is 0 square 0. It means what? If a number ends with 0, then the square of that number ends with 0. So this is the rule. If a number ends with 0, the square of that number ends with 0 also. For example, like this 10 square, 10 के लास्ट में 0 है, so its square is 100. It also ends with 0. Like 20 square 400 0. 20 ends with 0, then 400 also ends with 0. Number 2, if a number ends with 1, यदि कोई नंबर 1 से, if a number ends with 1, then the square of that number also ends with 1. Ends with 1. 1 square is 1. यदि किसी नंबर के लास्ट में 1 होता है तो उस नंबर का स्क्वायर भी 1 से एंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक 21 square is equal to 441. Here it is 1. You take 11 square is equal to 121. Here it is 1. The next, number 3, if a number ends with 2, then the square of that number then the square of that number ends with 4. Here it is 2 square is equal to 4. For example, a number is 40, ends with 4, then the square of that number is what? 12. 144. Here it is 4. यदि नंबर के लास्ट में 2 है तो स्क्वायर क्या होगा? 4 से होगा. नंबर 4, if a number ends with 3, then the square of that number ends with what?
here it is 3 से है तो 9 ends with 9. Therefore like that 13 square, this number ends with 3, then the square of that number ends with what? 1699. वो 9 से लास्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है. नेक्स्ट फाइव. If a number ends with 4, then the square of that number ends with what? 6. Here it is 4, 6. For example, 40. This number ends with 4. Then its square is 196. 6 ends with 6. Next property, if a number ends with what? 5, then the square of that number also ends with 5. यदि किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो वो 5 से ही लास्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक 15, लास्ट में 5 इज इक्वल टू व्हाट? 225. 5. ओके. The next, if a number ends with 6, then the square of that number also ends with 6. For example, like 16, 6 ends with 6, then its square also 256. 16 square is 256, so it ends with 6. Number 8, if a number ends with 7, then the square of that number ends with 9. 7 square is 49. 9. For example, like 17 में 7 लास्ट कर रहा है, so its square is 289. So 289 ends with what? 9. If you learn these types of property, then you can solve your problems without any problem, because in this types of question there is no necessary to solve. Only you write your properties. आपको सिर्फ क्या करना है? प्रॉपर्टी लिख करके आंसर्स देना है. 9th property, if a number ends with 8, then the square of that number ends with 4. Ends with 4. 8 का square 64. For example, 18 square is what? 324. Last में क्या आ रहा है? 4. And last, because we have only 10 digits, 0 to 9. So if you learn all these property, then you can easily find the unit digit of the square number. यदि इतने सारे सभी याद कर ले आप, तो आप किसी भी नंबर के लास्ट का स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा
ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. If a number ends with 9, then the square of that number then the square of that number ends with 1. यदि किसी नंबर के लास्ट में 9 है तो उसका स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 19 के लास्ट में 9 है, 9 का स्क्वायर करने पे क्या होता है 361. सो लास्ट में क्या आएगा 1. So these are the laws, these are the rules for finding the unit digit of the square numbers. After learning this one, you can solve the problems. Take one example how the question arises here. The question is here, what is the unit digit of the square of 24 के लास्ट में 24 का स्क्वायर करने पे क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 24 विदाउट एनी कैलकुलेशन. सॉल्यूशन में हमें लिखना है सिर्फ क्या 24, this is the required number, 24 ends with 4, so the square of given number ends with what, ends with 6. 4 का स्क्वायर सिर्फ करना है, 4 4 just 16, बिकॉज रूल्स भी हमारे पास है. ends with 6, ब्रैकेट में आप दिखा सकते हैं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो यहाँ लास्ट में 6 आ रहा है सिंपली. और चेक नाउ यू कैन टेक 24 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन 24 into 24 4 जा 576 होगा ये. क्या लास्ट कर रहा है 6. easily you can find the unit digit of the square of that number. So watch this video very carefully and solve these types of questions. Thank you.